गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो 17 चैप्टर है एमएनएन से रजिस्टर की 17 चैप्टर का जो सेक्शन है 17.2 में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट, उसको करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज टोपोलॉजी इन आरएन, राइट। जो आपकी बुक में 17 चैप्टर के अंदर है, सेक्शन 17.2। ठीक है स्टूडेंट। तो मल्टी वेरिएबल्स के टोपोलॉजी को समझना जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनको हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? इसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेबरहुड नेबरहुड एन ऑफ अ पॉइंट अल्फा और इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, राइट, देन ओपन सेट, क्लोज्ड सेट एंड बाउंडेड सेट। इन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट, राइट, जो मल्टी वेरिएबल को समझने के लिए बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, या फिर कहें कि मल्टी वेरिएबल्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो डेफिनेशन पढ़ने वाले डेफिनेशन ओपन डिस्क, राइट। तो क्या होता है ओपन डिस्क, राइट? तो स्टूडेंट्स, ओपन डिस्क centered at point C, A, B क्या है? एक कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट सी की, राइट। सो ओपन डिस्क सेंटर्ड एट पॉइंट सी विद रेडियस आर, जिसका रेडियस कितना होना चाहिए स्टूडेंट? आर होना चाहिए, विद रेडियस आर, राइट। इज डिफाइंड एज is defined as set of a comma b with radius r equal to, right? ये नोटेशन है स्टूडेंट, राइट। ओपन डिस्क का ये एक नोटेशन है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ set of all ordered pair such that root of x minus a whole square plus y minus b whole square less than r, राइट। चलिए स्टूडेंट, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, क्या मीनिंग है इसका, राइट। देखिए, तो मैं एक ओपन डिस्क डिफाइन करना चाहता हूं पॉइंट सी पे, राइट। और इस पॉइंट के सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट? ए बी, राइट। तो अगर मैं ओपन डिस्क डिफाइन करना चाह रहा हूं स्टूडेंट, जिसका रेडियस कितना होना चाहिए? आर होना चाहिए, तो मैं देखूंगा कि इस सी का डिस्टेंस किस पॉइंट तक आर हो सकता है। लेट दिस पॉइंट इज ए, राइट। सी से लेकर ए का डिस्टेंस अगर मैं आर मान लूं स्टूडेंट, तो वी कैन ड्रॉ सर्कल, ओके, वी कैन ड्रॉ सर्कल, राइट। तो ये जो सर्कल ड्रॉ किया गया है स्टूडेंट, इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, these are the members of the open disk, right? These all points are the members of the open disk. Are you getting that point? ठीक है, क्योंकि सी का डिस्टेंस कितना है? आर है। मैं क्या चाहिए? हमें ऐसा पॉइंट चाहिए, लेट दिस पॉइंट इज समवेयर, दिस इज एक्स कोमा वाई,
let it be, this point is x comma y, right? Let the name of the point is p. So C से लेकर P तक का डिस्टेंस ये R से कम आपको मिलेगा, राइट? The distance from C to point P is always less than the R, राइट स्टूडेंट? तो ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे एक्स वाई के, वो यहाँ भी मिलेगा आपको, यहाँ भी मिलेगा, जो ग्रीन पॉइंट्स हैं, इस सारे के सारे आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिनका डिस्टेंस पॉइंट सी से इज ऑलवेज लेस देन आर। तो इन सभी पॉइंट के सेट को हम बोलेंगे स्टूडेंट open disk. They will form a open disk, right? So the collection of all order pairs that satisfy this condition will form a open disk. Is that clear? I hope the meaning is clear to you, right? तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी ऑर्डर पेयर का जो सेट होगा, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स of all ordered pair x comma y satisfy the condition x minus a whole square plus y minus b whole square less than r will form an open disk, right स्टूडेंट? उसके बाद स्टूडेंट the second definition is closed disk, right? Closed disk centered at point C with radius r. उस केस में जो सर्कल के पॉइंट्स है स्टूडेंट वो भी आ जाएंगे, राइट? जो सर्कल के पॉइंट्स है वो भी आ जाएंगे। जैसे ये सर्कल है और ऐसे पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या स्टूडेंट ए कॉमा बी, राइट? ये मैं टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं अभी हम, टू वेरिएबल्स की, राइट? और लेट द नेम ऑफ द पॉइंट इज सी एंड लेट दिस द पॉइंट ऑन अ सर्कल इज ए and distance from A to C is R, right? Now all the points inside this circle, inside this circle and on the boundary will be the member of the closed disk, right? Are you getting that point? So this is all about your closed disk, right student? तो अभी हमने पढ़ा ओपन डिस्क फॉर टू वेरिएबल फंक्शन, राइट? अगर हमारे पास n वेरिएबल फंक्शन हो, राइट, उस केस में हम ओपन डिस्क को कैसे डिफाइन करेंगे, राइट? तो मान लीजिए we have point C having coordinates x1 comma x2 comma x3 dot xn, right? Now we can define an open disk centered at point C with coordinates x1 comma x2 comma dot xn with radius open disk centered at point C with coordinates x1 comma x2 comma dot xn with radius r, is the set of all n tuples, right, such that
स्टूडेंट्स अभी आपने ओपन डिस्क की डेफिनेशन ओपन डिस्क की डेफिनेशन जो पढ़ी वो टू वेरिएबल्स के लिए पढ़ी, राइट? नाउ लेट अस सपोज लेट अस सपोज तो स्टूडेंट्स अभी आपने जो ओपन डिस्क की और क्लोज डिस्क की डेफिनेशन पढ़ी वो टू वेरिएबल्स के लिए पढ़ी, राइट? नाउ सपोज वी हैव अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, राइट? या फिर हम कहें कि एक सेट गिवन है जिसमें मल्टी वेरिएबल्स हैं, यानी n कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट? तो ओपन डिस्क उस केस में क्या होगा? यानी अगर आपको n टपल का सेट गिवन है, राइट? चलिए लिखते हैं। Suppose there is a point A with coordinates a1 comma a2 comma dot 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 n, right? We want to define an open disk. We want to define an open disk at centered at, right? Centered at point A with coordinates a1 comma a2 comma dot 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 n, right? With its radius r. ठीक है स्टूडेंट, मैं एक ओपन डिस्क डिफाइन करना चाहता हूं जिसका सेंटर कहां पे होना चाहिए? पॉइंट ए पे होना चाहिए विद कोऑर्डिनेट्स a1 a2 डॉट डॉट an विद रेडियस r। कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज अ सेट ऑफ n टपल्स, इट इज अ सेट ऑफ n टपल्स, राइट? These are the coordinates x1 x2 xn, right? These are the coordinates of the point, right? Such that square root of x1 minus a1 whole square plus x2 minus a2 whole square plus dot 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 xn minus an whole square should be less than r, right? तो इस तरह से जो भी ये n टपल का सेट होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसे n टपल के सेट को हम बोलेंगे स्टूडेंट ओपन डिस्क, राइट? तो ये अगर ये किसके लिए अप्लाई होगा? जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेट्स n टपल का होगा, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट ओपन डिस्क। इसी तरह अगर हम इसको क्लोज डिस्क के बारे में बात करें, क्लोज्ड डिस्क centered at point A with coordinates a1 a2 dot 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 an with radius r। ये क्या होगा स्टूडेंट? ये n टपल का ऐसा सेट होगा that satisfy the condition root of x1 minus a whole square plus under root x2 minus a2 whole square, this is a1, plus dot 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 square root of xn minus an whole square always less than equal to r। सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ जाएगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट? तो दिस इज ऑल अबाउट ओपन डिस्क एंड क्लोज डिस्क सेंटर्ड एट अ पॉइंट गिवन पॉइंट, राइट? अगली जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए,
is the name of the point whose coordinates is a1, a2, dot 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 a, राइट। तो क्या होता है नेबरहुड ऑफ पॉइंट? मान लीजिए आपका एक पॉइंट दे रखा है एन टपल का, राइट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a1, a2, डॉट 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 a। मुझे इसका नेबरहुड ढूंढना है स्टूडेंट। तो नेबरहुड होता क्या है? एक्चुअल में नेबरहुड क्या होगा? एक सेट होगा, नेबरहुड of a point A is a set consist of n tuple, right? Consist of n tuple such that it contains an open disk. It contains an open disk containing the point A, right? अभी आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही स्टूडेंट, तो मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। तो देखिए, ये आपका एक पॉइंट गिवन है स्टूडेंट, ये आपका रेड कलर में एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट का नाम क्या है? ए है, राइट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a1, a2, डॉट 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 a, राइट। मुझे इसका नेबरहुड ढूंढना है स्टूडेंट। तो मुझे अगर इसका एक नेबरहुड ढूंढना है तो नेबरहुड क्या होगा? कोई भी एक सेट होगा जो क्या करेगा? एक ओपन डिस्क को कंटेन करेगा। मान लीजिए इसका एक ओपन डिस्क बनाना चाहते हैं हम, इस पॉइंट का एक ओपन डिस्क बनाना चाहते हैं, तो ग्रीन कलर में मैंने एक ओपन डिस्क बना दिया स्टूडेंट, दिस इज द ओपन डिस्क, राइट, दिस इज द ओपन डिस्क। तो अब ऐसा कोई भी सेट जो इस ग्रीन कलर के ओपन डिस्क को कंटेन करेगा, जो इस ग्रीन कलर के ओपन डिस्क को कंटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट ए। जैसे इस तरह का सब कैसे बना सकते हैं? जैसे मैंने ये ब्लू कलर का बना दिया ये, तो दिस इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। ये इसके अंदर एक ब्लू कलर का बना दिया, ये भी एक नेबरहुड होगा क्योंकि ये ओपन डिस्क कंटेन करता है, राइट। तो ऐसा नेबरहुड क्या होगा? नेबरहुड एक एन टपल का सेट होगा जो क्या करेगा? एक ओपन डिस्क को कंटेन करेगा, राइट, जो कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक ओपन डिस्क को कंटेन करेगा, और ओपन डिस्क उसको कंटेन करेगा, उस पॉइंट को कंटेन करेगा जिसका हम नेबरहुड निकालना चाहते हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड योर नेबरहुड, राइट। तो यहां पे जो सेट ए है, ये जो सेट ए है, ये भी ओपन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट है, और सेट बी भी क्या है? नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट है, राइट। लेकिन अगर मैं मान लीजिए पॉइंट ए हम बना दिया मैंने, राइट, इसके कोऑर्डिनेट है a1, a2, डॉट 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 a, एंड ये रेड कलर का मैंने एक ओपन डिस्क बना दिया, राइट। अब मैं एक सेट बनाता हूँ स्टूडेंट जो केवल जो इस तरह का होगा। मान लो कि मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन पेन से, राइट, ये ग्रीन पेन से। तो ये जो मैंने सेट रेक्टेंगल शेप बनाया है सेट ए, इट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बिकॉज दैट डजंट कंटेन at least one open disk that contain that point, right? ठीक है स्टूडेंट। so this set A is not the neighborhood. In place of that, if I draw a black pen rectangle like this is a neighborhood. Why? Because we have at least one black color open disk that contain that point. ठीक है स्टूडेंट। so this is all about your neighborhood of a point A, right? Now
स्टूडेंट जो अगली डेफिनेशन है दैट इज अबाउट इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट. That is interior point of a set, a given set S. तो अगर कोई आपको सेट गिवन है उसका इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ये इसको हम समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट. राइट. तो ओपन अभी हमने नेबरहुड पढ़ा था, ओपन डिस्क पढ़ा था, क्लोज डिस्क पढ़ा. राइट. अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ गिवन सेट एस. एक सेट आपको गिवन है. राइट. सेट एस में मान लीजिए आपके पास सेट जो एस है, सपोज एस इज अ set of ordered pairs. यानी हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं. ऐसा सेट जिसमें टू वेरिएबल्स एन टपल्स. राइट. तो उस सेट का इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, देखिए समझते हैं इसको. एनी पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट is called interior point of given set S if there exist at least one open disk. You can say there exists at least an open disk right. Open disk that contains the point p naught x naught comma y naught, and that open disk is the subset of given set S. ठीक है स्टूडेंट. इसको समझने की कोशिश करते मैंने क्या लिखा है, देखिए मैंने क्या लिखा है. मैंने क्या लिखा है कि ये जो पी नॉट है ये एक इंटीरियर पॉइंट होगा सेट एस का. राइट. कब होगा, ये तब होगा जब हमें एक ओपन डिस्क मिल जाए, जिसके अंदर पॉइंट पी नॉट हो, जिसके अंदर क्या हो, पॉइंट पी नॉट हो, और वो ओपन डिस्क सबसेट हो किसका, सेट एस का. राइट. देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ द गिवन सेट एस. राइट. मान लीजिए ये पॉइंट है पी नॉट, मुझे चेक करना है ये इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है किसी सेट एस का. मुझे क्या देखना होगा, मुझे देखना होगा क्या कोई एक ओपन डिस्क एग्जिस्ट करता है. कम से कम एक ओपन डिस्क एग्जिस्ट करना चाहिए. और ये ओपन डिस्क की खास बात क्या होनी चाहिए, दिस शुड इंटायरली लाई ऑन द सेट एस. ये ओपन डिस्क सेट एस के अंदर का ही मेंबर होना चाहिए, यानी सबसेट होना चाहिए सेट एस का. राइट. जो मैंने सर्कुलर शेप में मैंने सेट बनाया है दैट शुड बी द सबसेट ऑफ एस. देन वी से that point P naught is the interior point of the set S. Right. Then we say P naught x naught comma y naught is the interior point of S. Right, student.
अब देखिए, अब ये अपने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो एस है ये नेबरहुड की तरह काम करेगा स्टूडेंट। यानी अगर मैं ये कहूँ, पी नॉट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ set S, this implies S is the neighborhood of point S naught, sorry, P naught. Right, student? So this is all about interior point, right? अच्छा, ग्राफिकली भी अगर देखें स्टूडेंट, अगर मैं 2D की बात करूं, या अगर ग्राफिकली अगर इसको देखा जाए, तो देखिए, मान लीजिए ये आपको सेट एस गिवन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट? टू वेरिएबल्स का एक सेट एस गिवन है आपके पास, यानी जिसके टू टपल का सेट एस गिवन है, राइट? तो अब देखिए, इसके इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट होंगे? ये पॉइंट ब्लू कलर का, ये सारे ब्लू कलर के पॉइंट क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैं इसके, मुझे एक ओपन डिस्क जरूर मिल जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ ये पी नॉट है, मान लीजिए दिस इज पी नॉट, राइट? तो मुझे एक ओपन डिस्क जरूर मिल जाएगा जो इस पॉइंट पी नॉट को कंटेन करता होगा। और ये जो ओपन डिस्क है सर्कुलर शेप में, दिस इज इंटायरली इनसाइड द सेट एस, दैट इज व्हाई पी नॉट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट एस, राइट? अच्छा, अगर यही पी नॉट में बनाता इस बाउंड्री के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर बनाता स्टूडेंट, तो दिस इज नॉट द, चलो इसको नाम मैं रख देता हूँ क्यू नॉट, राइट? इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट क्यू नॉट, ठीक है? तो ये मैंने जो क्यू नॉट ड्रॉ किया है स्टूडेंट, दिस इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस, क्योंकि मुझे ऐसा कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं मिलेगा स्टूडेंट, ओपन डिस्क नहीं मिलेगा। इफ यू ट्राई टू ड्रॉ एन ओपन डिस्क दैट कंटेन्स द पॉइंट क्यू नॉट, तो ये ग्रीन कलर का जो ओपन डिस्क है, दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट एस। दैट मीन्स ये ग्रीन कलर का जो ओपन डिस्क है, दैट इज नॉट लाई entirely on the given set S. That is why Q naught is not the interior point, right? ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीरियर पॉइंट, ठीक है? अगर ये क्यू नॉट इंटीरियर पॉइंट नहीं है स्टूडेंट, तो फिर ये क्या है? व्हाट इज दिस, राइट? अगर ये क्यू नॉट इंटीरियर पॉइंट नहीं तो क्या है? व्हाट इज दैट पॉइंट? दैट पॉइंट इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट? दैट पॉइंट इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट of a given set S, राइट? तो यहां पे हम अब पढ़ेंगे बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है स्टूडेंट? तो कैसे डिफाइन करेंगे, राइट? तो सपोज कि हमें एक सेट एस गिवन है, लेट सेट एस, लेट सेट एस be you can say let set s be contains, set s contains points in R2। इसका मतलब है स्टूडेंट कि जो सेट एस है वो ऑर्डर पेयर का सेट है, ये टू टेबल का सेट है, राइट? देन अ पॉइंट q naught x naught comma y naught is called boundary point, of set S if
all open disks, centered at such that if all open disks centered at point q naught, x naught comma y naught contains points belongs to set S, and also these open disks contains points not belong to set S, राइट। देखिए स्टूडेंट, क्या मतलब है इसका, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये डेफिनेशन है, इसको बार बार रीड कीजिएगा, और अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ बड़े ध्यान सुनिएगा, राइट। हो सकता है डेफिनेशन से आपको क्लियर ना हो, लेकिन डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज ये आपका सेट गिवन है, राइट। जरूरी नहीं है कि ये जो सेट गिवन है वो आपका स्क्वायर शेप में हो, रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है। जैसे ये मैंने रेक्टेंगल शेप में सेट एस ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट। मान लीजिए दिस इज योर सेट एस, राइट। ये सेट कैसा है, टू टेबल का सेट है, राइट। अब मुझे चेक करना है, जैसे ये एक रेड पॉइंट मैंने बाउंड्री के ऊपर ड्रॉ कर दिया है, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए। क्या ये पॉइंट ए एक बाउंड्री पॉइंट है? मुझे क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मुझे ओपन डिस्क क्रिएट करने होंगे जो सेंटर कहाँ पे रखते हैं, पॉइंट क्यू पर, क्यू नॉट पर। यानी अगर मुझे ये चेक करना है कि ये पॉइंट ए एक बाउंड्री पॉइंट है या नहीं है, तो इस पॉइंट ए पर मैं ओपन डिस्क ड्रॉ करूंगा, राइट। दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ ओपन डिस्क सेंटर्ड एट पॉइंट ए। तो देखूंगा कि ये जो ओपन डिस्क हमने ड्रॉ किया है स्टूडेंट, some of the points belongs to the set S, right? That is why I have written all points this center at point A contains points belong to set S, belongs to set S, and also those open disks contain points not belong to set S. यानी ये जो ओपन डिस्क बनेगा इसमें कुछ पॉइंट्स तो सेट एस से बिलोंग करेंगे, और जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं जो इस बाउंड्री से बाहर हैं स्टूडेंट, यानी ये जो ग्रीन कलर के पॉइंट हैं, दिस ग्रीन कलर पॉइंट, दीज आर नॉट बिलोंग टू सेट एस, राइट। तो कोई भी अगर ओपन डिस्क ड्रॉ करें जो सेंटर कहाँ पे है, ए पे है, तो हमें क्या मिलेंगे, सम ऑफ द पॉइंट्स बिलोंग टू सेट एस एंड रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स डज नॉट बिलोंग टू सेट एस, राइट। तो मैंने क्या बोला, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डेफिनेशन और अच्छा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर पॉइंट ए को मुझे बाउंड्री पॉइंट चेक करना है या नहीं है, तो वी हैव टू ड्रॉ ऑल ओपन डिस्क, राइट। एंड what is the property of this open disk? That means these open disks contains some points that belong to set S and rest of the points does not belong to set S. Then that point A is called boundary point, right? अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं इस रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट बी ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट, राइट। तो अगर मुझे चेक करना है ये बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं है, तो मुझे ऑल टाइप ऑफ ओपन डिस्क ड्रॉ करने पड़ेंगे, ऑल टाइप ऑफ ओपन डिस्क ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है जी, कर दिए। तो अगर मुझे कम से कम एक ओपन डिस्क ऐसा मिल जाए, कम से कम मुझे एक ऐसा ओपन डिस्क मिल जाए, एक ऐसा ओपन डिस्क मिल जाए that contains only the point of set S, that contains only the point of set S, that means that point is not the boundary point. Here in this case we get
that green colors open disk, right? We get this green color open disk, right? Which is entirely on this rectangle. That means all the points of that green colored open disk are also the member of set S. That means point B is not the boundary point, because we get at least one open disk whose all the members are also the members of set S, right? That is why the point B is not the boundary point, but the point A is the boundary point, right? So this is all about the boundary point. Now, again, in this diagram, if I see there is a point related to the point is C, right? Here in this diagram, point A is a boundary point. Point B is a interior point. What about the C? What about this C? This C is your exterior point. This is your exterior point of the set S, of the given set S, right? So how we define the exterior point now? So now the definition of exterior point of set S. A point P, x naught, y naught is called an exterior point of set S if there exists at least one open disk if there exists at least one open disk one open disk which is not a subset of given set S, right? जैसे कि अगर मैं इस रेक्टेंगुलर गिवन सेट मान लूं स्टूडेंट, राइट, और दिस यूर सेट एस, और यहाँ पे एक पॉइंट मैं पी ड्रॉ कर दूं, राइट, जिसके कोऑर्डिनेट्स के एक्स नॉट वाई नॉट, राइट? तो इस पॉइंट पी को हम कहेंगे स्टूडेंट एक्सटीरियर पॉइंट. व्हाई? बिकॉज वी गेट एटलीस्ट वन ओपन डिस्क centered at P, right? Which is not the subset of the set S, right? That means we get an open disk whose members are not the members of set S, right? यहाँ देखिए जो भी ओपन डिस्क मैंने ड्रॉ किया है पॉइंट P के, that contains the point P, in red color, right? There is not a single member, right? There is not even a single member which belong to set S. That is why it is called, but point P is called exterior point, right? तो exterior point की definition क्या है स्टूडेंट? exterior point P की definition क्या है? अगर आप point P को exterior point कहते हो तो कब कह पाओगे? When we get at least one open disk, right? That does not
that does not contain any member of set S. Right here, you see this circular disk does not contain any member of set S. That is why the point P is called exterior point of the set S. Right? Now, the next definition is open set. Right? What is open set? And what is closed set, right? A given set S is called an open set if all of its points, or you can say member, if all of its members or points are the interior points of set S, right? For example, अगर मैं आपको एक सेट एस दे दूं, जैसे मैं एक सेट एस डिफाइन करता हूं, such that this set of ordered pairs such that x yes, x square plus y square less than 1, right? तो अगर इसको आप ग्राफ ड्रॉ करो स्टूडेंट, व्हाट इज अ ग्राफ? Right? Let this suppose right. So this is your 0, 1. This point will be sorry. This is your 1, 0, right? This is your 1, 0. This is your 0, 1. This is your -1, 0. This point will be your 0, -1, right? Now, because the set S is the ordered pair, right, which satisfy this condition, right? That means we if we try to draw the graph, we get all the members will be inside this circle, right? Inside this circle. And no members of the boundary points are not the members of set S, right? The boundary points are not the members of the set, right? So in this case, each and every point is the interior point of the set S. How I said that? Because if you get a point very close to, let us suppose that this red point is very close to the boundary, right? In that case, we can get at least one open disk when we get at least one very small open disk, right? Very small open disk that contains that point, red color point, and that is entirely inside the set S. That is why this red color point is a interior point, right? The same holds for all the other points. The same holds for all the other points. That means in this case, each and every point is a interior point. That is why the given set S is a open set. So this set S is open set, right? Now the next definition is closed set. Closed set. Right. A set S is called closed set if it contains all its boundary points.
if it contains all its boundary points, right? For example, if we define a set S of ordered pair such that under root x square plus y square equal to 1. So this set S is a closed set. Why? Because if you try to draw the graph of this given set, right? Right. In this case, the set S contains only those points which are on the boundary, right? So these green color points, the points on the circular, you can say the points on the circumference will be the member of the set, right? So these all are boundary points. That is why the set S is a closed set. We can give you another example. Let's suppose we define a set S1 such that under root x square plus y square less than equal to 1, right? This is again a closed set, right? Because in this case, the diagram will be the same, right? But the graph will change. Means the graph that satisfies the given condition will change, right? In this case, the green points inside the circle are the members of the given set S, right? Also, the points on the boundary are also the members of this set S, right? So that means this set S contains all the red points. That means all the boundary points. So that is why the set S1 is also your closed set, right? This is your closed set. And set S is also your closed set, right, student? So this is all about your closed set and open set, right? So I hope you understood this lecture very well, right? तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा नेबरहुड ऑफ अ सेट, सॉरी, नेबरहुड ऑफ पॉइंट, right? Then interior point, then exterior point, boundary point, right? Then the definition of open disk also we studied today, closed disk, then open set and closed set, right? I hope कि आपको ये सारे जो डेफिनेशन है वो अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और याद रखिएगा दीज डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आती है तो मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन को करने में आपको बहुत आसानी होगी, राइट? तो इन डेफिनेशन के बिना मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।